Very good afternoon to all of you. I welcome all the participants in this virtual drive of CareSoft Incorporation. We have Mr. Amit Kumar Das, sir, Senior Manager HR from CareSoft with us for today's presentation, and he will brief you about the selection process and the job description also. So, welcome, Amit, sir, on this platform. Thank you, Abhishek. I, yeah. So thank you, sir, for coming. And now I request Amit Das sir to kindly start with your presentation. And at the end of the session, like student, if you have any query, you can ask to the HR. Over to you, sir. Is my screen visible? Yes, it is visible, sir. Okay. First of all, good afternoon to all of you. And I would like to thank college and management of Rabindranath Tagore University for giving CareSoft an opportunity for the campus drive. Let me brief about something about myself first. Myself, Amit Das, and I am into HR since last 20 plus years. I have been associated with CareSoft since last 5 years, and so okay, that was my brief description. Now let's start with the PPT. So first of all, I would like to inform all of you that CareSoft is an MNC and it's an US based company and based out at New Jersey, Somerset. And in India, we have its office in Bhopal and in Pune. But currently, we are hiring for the Bhopal office only. Okay, so the this would be the agenda for the PPT. See, as I told you all that CareSoft was founded in the year 1994, and it is based out at Somerset, New Jersey. We have our development centers in US and India, and we have in Mexico also, in and Caribbean countries also we do have. We are into big data practice, and we have business. We work into business intelligence also. We are mid-sized but very highly specialized organization, and we have been nominated and we have been listed in various publications of US like Black Book of Sourcing, then Deloitte and Touch. Then we have been nominated for the Fortune list of the 100 best software companies to work for, and we have been into the cover pages of Commerce and Silicon India and many other leading articles. So CareSoft has been leader in its own field. So he is our founder, Mr. Deepak Khare, and he is passed out from B Manit. He has done his Bachelor of Engineering in Manit, Bhopal. Then he went ahead to New York and he had his further studies there. And being born and brought up in Bhopal, so he had a thought to do something for the Bhopal students so that they don't have to go outside Bhopal. So in that way, the CareSoft took place. So currently we do deal in ERP and package software. We are into business intelligence, big data, and cloud and other things. We do offer package software also, and basically we work in a Hyperion. So Hyperion, CareSoft is basically a company. I think in MP, it's the first and only company which works in Hyperion, and it's a niche of CareSoft because Hyperion is not used by everyone, and it is basically an ERP. And whenever we think of ERP, it comes in our mind that ERP must only be SAP or Oracle, something SAP or Oracle will be in ERP. But Hyperion is also an ERP, and it's a part of Oracle only. So it's basically it is used into a financial package.
So now coming into business intelligence, we work into business centralization, which helps in to store big data at a very fraction of time, and it reduces uh, costing also, and many other things are there. I will not go into technical part so deeply. So this is we are working into big data also, and this cloud and SaaS and PaaS also. And coming to this few of our case studies, we have a client which is a very world number one VoIP provider in telecom sector. Will not take the name, but hackers used to means hack their phone calls, unauthorized phone calls, and were trying to destroy their infra. So they approached Caresoft, and we, by using the big data based intelligence system, we try to means work on their hackers, so that now, but now the condition is that hackers are not able to hack their system. So we are client to a USA number one cable TV provider also, and we work for a largest solar power plant in US. Basically, you all must be knowing that solar means it works on the sun. As the sun moves, the solar panels also move. But in this solar power station, the main source is, of course, the sun is the main source, but it works on the oil. So as the sun rays get stronger day by day, the oil also gets heated up, and it helps in generation of the power. So it's a one of a kind in the world. And we use their we help them in their support system. And we are the client of the largest resort company in America. And if you Google it, AMR Resorts is one of the largest resort company in US. These are few of our clients like Black and Decker, IBM, Oracle, Symantec, Body Shop, Goodyear, and few of them which I'm mentioning here. And coming to your roadmap, see, being we as the hiring is currently now going on for the freshers, so you all will be working for Hyperion. Okay, the Hyperion is Caresoft niche. So it is a very niche software, means everyone are not able to work on it, and it will be a very good opportunity for all of you whoever is selected to work in Hyperion. So this is our India office, which currently it is closed due to Corona. But as soon as this Corona scenario is down, we will start with our office. Till then, we all are working from home. Okay. Now the PPT is finished. Now coming to that other conditions. First of all, as I told you that US being an the Caresoft being an US based company, so we have night shifts. So our timings are from 6:30 till 3:30 in the morning. So it's a total night shift job. No rotational job, no day shift. It is permanently night shift. So if there is anything in your mind that you cannot work in night shifts, या पापा से पूछना है, मम्मी से पूछना है, या किसी रिश्तेदार से पूछना है, तो आप लोग पहले उसको कंफर्म कर लें, फिर उसके बाद आगे बढ़े. बाद में अगर प्रोसेस आगे बढ़ती है, आप लोग सेलेक्ट होते हैं, फिर ये नहीं होना चाहिए कि पापा से बात करना है या घर पे बात करना है. तो जो भी है आप लोग माइंड बना के फिर पेपर दें आप लोग. ठीक है. वी आर 5 days working, and currently we are offering 2 lakhs per annum CTC, and it would comprise of 90% fixed and 10% variable. We have 2 years bond, and the bond amount would be 1 lakh. For that we take security check, and that check will be used for only for security. It will not be deposited in the bank. वो जो चेक रहेगा खाली सिक्योरिटी पर्पज से रहेगा, वो कोई बैंक में जमा नहीं होगा. मैं फिर से बता दूं आप लोगों को हिंदी में कि 2 साल का बॉन्ड रहेगा और 1 लाख रुपए की सिक्योरिटी चेक लगता है उसमें.
और आपको का जो पैकेज रहेगा वो 2 lakhs पर एनम रहेगा और इंक्रीमेंट हर साल होते हैं यहाँ पे, प्लस आपका जो पैकेज रहेगा उसमें 90% फिक्स और 10% वेरिएबल रहेगा. So I have done from my side. Now any query, acha, coming to the exam test part, I will be sharing a test link in chat box after some time. So the question, it comprises of 40 questions and 30 minutes time would be given. Objective type questions, no negative marking. So I will request everyone to attempt all the questions, and I would also I will not close the link within just 30 minutes, but I will give a buffer time for 10 minutes extra, so that if someone has lost any connectivity issues, then that can be covered in that 10 minutes time. Okay, so any further questions from you all students? किसी को कोई क्वेश्चन पूछना हो तो वो पूछ सकता है. Excuse me, sir. There is a question. Yeah. Amit sir, after the written test, what is the selection process like? हाँ, okay. Coming down to the selection process, जैसे ये टेस्ट होता है, so I will share the results with Abhishek sir by today evening or tomorrow morning, and जो भी इसमें पास होते हैं, they will be having first round of technical round of interview through Skype. फिर जो फर्स्ट राउंड में क्लियर होंगे उनका सेकेंड राउंड भी होगा, वो भी टेक्निकल राउंड ही रहेगा, और उसके बाद में फिर तुरंत ज्वाइनिंग रहेगी. फिर ठीक है. ये जो सर टेक्निकल राउंड रहेगा, सेकंड जो भी एलिमिनेटेड स्टूडेंट्स रहेंगे उनके लिए जो शॉर्टलिस्ट होंगे, तो उनका प्रोग्रामिंग बेस्ड होगा या समथिंग, मतलब कुछ और होगा टेक्निकल में? नहीं, प्रोग्रामिंग बेस्ड रहेगा. प्रोग्रामिंग बेस्ड. Sir, there is a query. Yeah. Yes, Kushal. Sir, in which is the language which you are preferring? See, currently we have no preference. We are looking for the candidates who are easy going with any of the software or programming language, whether it's C, Java, Android, anything. Okay, but you all should be ready to means work on any platform. Okay. Okay, sir. And one more query, sir. If someone is already employed in internship and he needs a buffer time for 1 month, can he be eligible? See, we are looking for the candidates who can join immediately. Sir, I have a doubt. Although all this process will take at least 10 days, so I think 10 days will pass just like that only. Hello, sir. हाँ. I have PHP language knowledge, and please tell me about your shifting time, please. Again. Shift time is 6:30 शाम को 6:30 से सुबह 3:30 बजे तक के. Okay, sir. PHP वाले भी दे सकते हैं ना पेपर? हाँ, दे सकते हैं. Thank you, sir. और कोई क्वेरी किसी को? Sir, हाँ. so only computer background candidates can eligible? Yeah, we are looking for with computer science background only. But if you are good with software, means with coding language, and you are into another जो शिफ्ट टाइम है वो बेसिकली जो है यूएस के हिसाब से है, तो जो yeah, any other queries? Hello, any other queries, or shall we start with the paper?
अमित सर, जो भी कैंडिडेट फाइनली सिलेक्ट होते हैं, जो ऑफर्ड कैंडिडेट होंगे, उनका टेंटेटिवली ज्वाइनिंग कब से रहेगा? सर हम तो तुरंत अगले दिन से ज्वाइन करवा लेंगे उनको। ओके। एंड जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो आई थिंक शायद 1 वीक to 2 वीक का समय तो लगेगा ही फाइनल हाँ लग जाएगा। प्रोसेस करने में। हाँ 7 से 8 दिन लग जाएंगे। कुशल? यस सर। हाँ कुशल, तो मिनिमम 15 डेज अभी हमको लगेगा इस प्रोसेस को कंप्लीट करने में। और आपका जो इंटर्नशिप है, अगर उसमें बीच में कुछ आता है, 10-15 दिन का गैप बचता है, तो वी विल वर्क इट आउट। ओके सर। वो देखेंगे आपका एक बार फाइनल सिलेक्शन होने के बाद में। अभी प्रायोरिटी जो है, यू कैन अटेंड द रिटन टेस्ट एंड द एंटायर सिलेक्शन प्रोसेस, और वंस यू सिलेक्टेड वी विल वर्क इट आउट। सो मैं आई थिंक सर अभी क्वेरीज नहीं है कैंडिडेट को। सो हाँ, आप एक टेस्ट लिंक शेयर कर लीजिए इस पर, और स्टूडेंट अपना टेस्ट इमीडिएटली स्टार्ट करेंगे। 40 मिनट्स के बाद आई थिंक आप क्लोज कर देंगे इस लिंक को। हाँ 40 मिनट के बाद मैं क्लोज कर दूंगा मैं। ठीक है। ये मैं और स्टूडेंट्स को टेस्ट कैमरा ऑन रखना है ड्यूरिंग एंटायर टेस्ट। नहीं वो क्लोज कर दें, वो अपना टेस्ट करते रहे अपन। ये इसके बाद में अपन मीटिंग क्लोज कर देंगे और वो लोग अपना टेस्ट शुरू कर दें। और नहीं 40 तो मिनट के अंदर ड्यूरिंग टेस्ट, मतलब जैसे आपने बताया था कि जूम में ही ये टेस्ट रहेगा, तो वो टेस्ट के दौरान उनको जो है कैमरा ऑन रखना है? नहीं क्लोज कर देते हैं। मतलब क्लोज मतलब मीटिंग क्लोज कर देंगे अपन, तो वो लोग अपना टेस्ट देते रहेंगे बैठ के। नहीं, जो टेस्ट उनका चलेगा उसमें उनको कैमरा ऑन रखना है ना, मतलब जूम में ही टेस्ट होगा ना? नहीं ये मैं गूगल का लिंक दे रहा हूँ, ये लोग गूगल के लिंक में Okay. करते रहेंगे। हम मीटिंग एंड कर देंगे, है ना, वो लोग अपना करते रहेंगे। ठीक है। ओके, ठीक है। ये लिंक मैंने शेयर कर दिया है। स्टूडेंट, आई थिंक अभी कोई क्वेरी नहीं है, तो वी कैन स्टार्ट विद द रिटन टेस्ट ना। या लिंक सर ने शेयर कर ली है मैसेज में, सो आप इस लिंक के थ्रू जाके अपना स्टार्ट कर सकते हैं टेस्ट। दैट इज द ऑब्जेक्टिव टेस्ट। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन इसमें रहेंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, आपको आंसर करना है उसमें। और आप सब लोग ये लिंक कॉपी करके अपने पास सेव कर लें, है ना, और टेस्ट शुरू कर दें, क्योंकि जैसे अपन मीटिंग एंड करेंगे तो ये टेस्ट लिंक भी चले जाएगा। अभिषेक जी मैं आपको भी भेज देता हूँ अलग से, है ना। हाँ सर, यू शेयर विद मी, सो मैं ग्रुप में अभी उसको शेयर कर लूंगा स्टूडेंट के साथ। ठीक है। सो लेट्स एंड द मीटिंग, वी कैन एंड द मीटिंग। ओके, thank you Amit sir for sharing all the things from your end, or all the best to all the students, and thanks for joining this campus drive, or all the best for the written tests. Thank you all of you. So अभी आप लोग लेफ्ट कर सकते हैं और अपना टेस्ट स्टार्ट करें। इवनिंग तक मेरे पास रिजल्ट आ जाएगा, so we will share with all the students. लिंक कॉपी नहीं हो रही सर, लिंक कॉपी नहीं हो रही सर। हेलो सर। सर लिंक कॉपी होने में प्रॉब्लम हो रही है। डायरेक्टली उस पर नहीं, आप डायरेक्टली उस पर क्लिक करिए और उसको स्टार्ट कर लीजिए टेस्ट को। और हम लोग ग्रुप में भी अभी शेयर कर लेंगे आप सभी के साथ। ओके थैंक यू सर। चालू कर दी इसकी नहीं, अबे नहीं कर रहा। हम लोग इसको मीटिंग को क्लोज कर रहे हैं, आप लोग अपना टेस्ट स्टार्ट कर लीजिए ना। रमन सर, इसको क्लोज कर दीजिए मीटिंग को।